Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. We are going to start chapter number 5, which is named as computer architecture. First of all, you need to know what is meant by architecture. Basically, architecture is an art of designing the structure of something. किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का फन, इसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम यूज़र की नीड्स का पता लगा सकते हैं. वी कैन डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज. Today our topic is CPU registers. First of all, I will explain what is register. Register is a very small and high speed memory inside the CPU that is used to store data and instructions temporarily. अगर हम डाटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर में करवाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर में वो वाली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिन्हें हमने एग्जीक्यूट करवाना हो. CPU contains a number of registers. Each register has a predefined function. Similarly, each register has its own size. Its size determines how much information it can store. The size of register is always in bytes. रजिस्टर का साइज हमेशा बाइट्स में होता है और एक बाइट में हम एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं. अगर हमारे पास रजिस्टर का साइज 1 है तो उसमें 1 करैक्टर स्टोर होगा. अगर रजिस्टर का साइज 2 है तो उसमें 2 करैक्टर स्टोर हो सकते हैं. सिमिलरली रजिस्टर कैन बी ऑफ 4 और 8 बाइट्स. लेकिन अगर रजिस्टर का साइज इंक्रीज करते जाएंगे हम तो इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती जाएगी. यू कैन ऑब्जर्व द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, बट सीपीयू नीड्स स्टोरेज एरिया वेयर डेटा स्टोर्ड टेम्परेरीली. सो वी कैन डिफाइन इट एज टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज आर प्रोवाइडेड विद इन सीपीयू फॉर इनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू. These special purpose storage areas are called registers. Here we have to discuss some special purpose registers. These registers are used by the CPU. First one is PC. PC stands for program counter. This type of register is used to store the address of the next instruction to be fetched for execution. हम next जिस भी instruction को execute करवाना चाहते हैं उस instruction का address PC में रखा जाता है. Next is IR. IR stands for instruction register. Once the instruction is fetched, it is stored in the IR. हम next जो भी instruction को execute करवाना चाहते हैं वो वाली instruction IR में रखी जाती है. And if we talk about MAR, it stands for memory address register. When the CPU wants to store some data in memory, it places the address of the required memory location in MAR. अगर CPU मेमोरी में कोई डेटा स्टोर करवाना चाहता है तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस MAR में रखा जाता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं. जिस भी मेमोरी में हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं उस मेमोरी का एड्रेस MAR में रखा जाएगा. एंड नेक्स्ट इज MBR. MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डेटा आ रहा है या वहाँ से सेंड किया जा रहा है वो सारे का सारा डेटा MBR में रखा जाता है. Here we have to discuss stack pointer register. First of all, you must know that what is stack. A stack is a set of memory locations. ये memory locations का एक set है in which data is stored and retrieved in an order. जिस order में डेटा स्टोर किया जाता है उसी order में डेटा रिट्रीव भी किया जाता है. This order is called LIFO. LIFO means last in first out. जो डेटा हम सबसे लास्ट पे एंटर कर रहे हैं वो डेटा सबसे पहले हम रिट्रीव कर सकते हैं. The data item stored at the top of the stack is retrieved before retrieving the item below it. To understand the purpose of this register, it is very important to understand the arrangement of data which is called stack. Now we learn different general purpose registers. इन रजिस्टर्स को मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है. वी कैन ऑल्सो से दीज आर द पार्ट ऑफ ALU.
where ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. Some of the general purpose registers are accumulator register, base register, counter register and data register. Here, accumulator register is used for arithmetic and data operations. Base register is used for arithmetic and data movement. Counter register is used for counting purpose. And data register is used for division and multiplication. And the size of these registers can be 1 to 4 bytes. 2 byte data registers are AX, BX, CX and DX. इन registers का size 2 byte हो सकता है. 2 byte means 16 bits. अगर हम इनको 2 parts में divide कर दें तो first part का size होगा 8 bit और second का भी होगा 8 bit. दोनों को अगर combine कर दिया जाए तो total बन जाती हैं 16 bits and we know that 1 byte equal to 8 bits. तो दोनों parts की bits को अगर हम combine करें तो ये 2 bytes data register बन जाएंगे. These parts are separately accessible. Here lower order bytes are AL, BL, CL and DL, where A stands for accumulator, B stands for base, C stands for counter and D stands for data. The lower order bytes are AL, BL, CL and DL and higher order bytes are AH, BH, CH and DH. Here H represents higher order and L represents lower order. General purpose registers are also called EAX, EBX, ECX and EDX. They can be used for mathematical or logical operations, used for arithmetic and data movement purposes. Each can be divided into an upper and lower byte, where A stands for upper byte and L stands for lower byte. These are called AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH and DL. You can see a table on your screen. Here, lower and higher bytes are separately accessible. Next is address or segment register. Here, the word segment is a block of memory. These type of registers are used to store the address of memory blocks of the instructions being executed. There are 4 segment registers. These are CS, DS, ES and SS. Here, CS stands for code segment, DS stands for data segment, ES stands for extra segment and SS stands for stack segment. And the size of each register is 2 bytes. Here we learn the purpose of address registers. First one is CS. CS holds the base location of all executable instructions in the program. And DS is a default base location for memory variables. ES is an additional base location for memory variables and SS register contains base location of current program stack. Each register has 2 bytes and these registers are also called segment register. हम address register भी कह सकते हैं या फिर segment register भी कह सकते हैं. Now you have to learn different types of registers and you have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.